हम बोलते हैं कि क्रिकेट इज रिलीजन. आई थिंक इट वाज रिलीजन देन. अगर स्पोर्ट्स में चीटिंग हो तो उसका मजा ही नहीं है. उसके ऑडियंस के लिए कुछ नहीं है उसमें. फिल्म में हर जगह गए, वेदर इट इज योर क्रिकेटर्स, वेदर इट इज जर्नलिस्ट्स, वेदर इट इज आर्काइव मटेरियल, आपको कंट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना कि आप हमारे साथ कैमरा पे बात करें. That is not easy. You know, when is the last time you heard a CBI, former CBI officer bear all and tell you what it was like for him to do something of this kind? देखिए, एक उसमें सेक्शन है जहाँ पर विवेक ओबरॉय बताते हैं कि फिक्सिंग कैसे होती है. You know, when you set out to tell people about match fixing, about illegal betting in cricket, they're two different things. And you want to break it down. But हमारी एक non-fiction film है, तो while they could apply drama and they could use you know, great dialogues and they could write their story well for us, we wanted to rely on the right people, the real people. अब पैसों की बरसात हो रही है. So अगर आप क्रिकेटर हो, अगर आप IPL में हो, अगर आप WPL में पहुंच गए. Hi Supriya, welcome to AVP today. How are you doing? I'm very well. Thank you for having me. आप आजकल एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बोलूं, डॉक्यू फिल्म बोलूं, जिसकी बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं. आई थिंक वो आप एक ऐसे टॉपिक पर भी कहीं ना कहीं लेकर आए हो जिससे पूरा इंडिया बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, बहुत जुड़ा हुआ है. दैट इज क्रिकेट. एंड क्रिकेट एक ऐसी चीज हो चुकी है इंडिया में अब कि हर थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई टूर्नामेंट होता है. एक टाइम था जब लोग वर्ल्ड कप का वेट करते थे. अब लगता है कि हर थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई टूर्नामेंट है, क्योंकि प्यार इतना है लोगों को क्रिकेट से कि ये सब चीजें शुरू हो गई है. और आप लेकर आए हैं कॉट आउट. बिल्कुल. What was the idea behind it and why did you think कि इसके ऊपर कुछ बनाना है, वो भी इतना hard hitting, you know, because biggest cricketing scandal के ऊपर ये है, मतलब why did you think of it? देखिए, कॉट आउट एक रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्री है जो हमें ले जाती है 90s में. जी. जब क्रिकेट आज से काफी डिफरेंट था. आज जैसे आपने कहा कि हर जगह मैच हो रही है, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है. तब हम इंतजार करते थे कि कब इंडिया खेले. और जब इंडिया खेलता था तो हम अपने घर पे बैठे रहते थे. हम कहीं नहीं जाते थे. इट वाज एवरीथिंग फॉर अस. हम बोलते हैं कि क्रिकेट इज रिलीजन. आई थिंक इट वाज रिलीजन देन. आज तो फिर भी लोग बिजी हो गए हैं, डिजिटल मीडिया आ गया है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें हैं, तो लोग, you know, you are caught up, you are caught out with a lot of other things, if I can say that. But उस वक्त तो cricket was almost everything for us. Also, वो एक ऐसा टाइम था जब हम अपने क्रिकेटर्स को वर्शिप करते थे. तो हमने सोचा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑल्दो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ऑल्दो ये 90s एंड 2000 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल है, जो उसका इम्पैक्ट है वो आज भी वैलिड है, आज भी दिखाई दे रहा है. क्योंकि उस स्कैंडल के बाद ही आप देखें तो जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, जो इंडियन क्रिकेटिंग BCCI है या जो ICC है, उन्होंने उसके बाद ही अपनी एंटी करप्शन यूनिट शुरू की. तो in a way this blew the lid on something that we didn't want to recognize, और एक ऐसी चीज जो हम नहीं जानना चाहते थे. तो हमने सोचा कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा होगा who has lived through that moment, जो इस इवेंट के बारे में जानता है. And more than anything हम चाहते थे कि हम लोगों को ये स्टोरीज बताएं जो इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट की है. क्योंकि अगर आप देखें फिल्म तो this is the point of view of your CBI investigators, the Delhi police officer, the journalist who did the Tehelka sting, the journalist who first interviewed Mohammad Azharuddin when he decided he would like to talk about what journey they took. उनके लिए कैसा रहा to investigate this big scandal. You know, there is a lot of weight on you जब आप ऐसी कोई स्कैंडल को अनर्थ करें. और हम चाहते थे कि हम इन लोगों की, इनकी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी बताएं, लोगों को ये बताएं कि इनके लिए क्या होता है, इसके बारे में बात करना. कहीं आपके लिए ये भी चीज हेल्प तो नहीं की, क्योंकि आप भी जर्नलिज्म कर चुकी हैं और अब जर्नलिस्ट खुद रह चुकी हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो वाला साइड भी दिखाना इम्पोर्टेंट था? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच है. मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ. आज का जर्नलिज्म और उस टाइम का जर्नलिज्म बहुत अलग है. आज तो हमारे पास गूगल है, हमको कुछ स्टोरी जाननी हो जरूरी नहीं है कि हम फील्ड पे जाके हमें पता चले कि क्या हो रहा है. काफी ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो आज भी ये करते हैं, एंड दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म व्हिच अ लॉट ऑफ अस मिस. लेकिन जो 90s में हो रहा था, ये स्टिंग ऑपरेशन करना, आपने कितने लोगों से लड़ाई ली होगी while doing this. Can you imagine what it was like for those guys to go and sting people who we called our heroes? It takes a lot of guts. बिल्कुल, it takes a lot of courage. You are going to go against
the almighties of the nation, if I can call it that, you know. और अगर आप कहीं भी आपने कुछ गलत रास्ता चुना या कुछ गलत दिखाया या something doesn't make sense to the public, you know, you are at their disposal. तो काफी burden था, not just on the journalists but also on the CBI investigators, जिन्होंने you know ये mammoth task लिया इनको हमारे cricketers को interrogate करने का, उनके बारे में सच्चाई ढूंढने की, whether they are linked, what is going on, you know, the dirty dark truth of cricket, जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने reveal किया है, जो इस फिल्म में है, that was not a child's play, if I can call it that. अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो आपने रिसर्च कैसे किया, कितना क्रिकेट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहा है बचपन से? देखिए, I want to say at the outset, रिसर्च के लिए तो एक टीम लगती है. I have to give a lot of credit मेरी producers जो रही, मेरी researcher रही, I'm very happy to say they were women. You know, हम एक male dominated subject पर काम कर रहे थे, but the women on the ground who were leading, you know, there were women on the ground who were leading this male dominated subject, and we didn't leave any stone unturned. हम हर जगह गए, whether it is your cricketers, whether it is journalists, whether it is archive material, whether it is CBI investigators, there were a lot of people जो आप जिन लोगों से आप फिल्म में मिलते हो, जिनके बारे में जानते हो, जिनकी बातें आप सुनते हो, उनसे कई ज्यादा लोगों से हम मिले, काफी ज्यादा रिसर्च की, और उसके बाद ही हम ये स्टोरी बता पाए. बट नॉन फिक्शन का ये होता है, आप अपने इंटरव्यूज कर लेते हो, उसके बाद ही आपको पता है अपनी स्टोरी कैसे निकलती है. You can't script something like this. You don't know which way it's going to go. There are so many facts जो आपको on the ground पता चलते हैं, और यही इंटरेस्टिंग बात है इस जॉनर में, नॉन फिक्शन जॉनर में, कि you don't know ये स्टोरी कहाँ जाएगी. लेकिन ऑफ कोर्स ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म नहीं है. नेटफ्लिक्स पे जो हम स्टोरीज डालते हैं वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू इन्फॉर्म पीपल, बट यू हैव टू do it in a way that there is ethical journalism, the story is balanced, you're presenting all sides, and you are staying true to your subjects. लेकिन हमारे लिए तो फोकस इसमें यही रहा, जो unsung heroes हैं उनके बारे में हम बताएं इस फिल्म में, and that's what we were able to do with incredible research. But you know, it just doesn't stop at research के बाद आपको contributors को convince करना कि आप हमारे साथ कैमरा पे बात करें, that is not easy. You know, when is the last time you heard a former CBI officer bare all and tell you what it was like for him to do something of this kind? मेरे लिए, not in my books. I have not been able to come across so many stories in the public domain. So I think, you know, in terms of access, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज रही, and with great research, with a solid team on the ground. हमारे जो DOP थे, you know, a guy, a very young guy, but again very, you know, an ardent cricket fan. तो जब भी हम कोई, you know, कोई मुद्दा उठाते थे, and if it was about factual things about cricket, उनका हाथ खड़ा हो जाता था. ये बात मैं आपको बताता हूँ. You know, so there was a lot of teamwork that went into telling the story, making sure कि हमने सारी areas touch किए हैं. क्योंकि आप देखिए, ये जो contributors जिनके साथ हम इंटरव्यू करते हैं, you don't get a second chance at it. You get them once, and you have to tell your story. आप उनको सब कुछ तभी पूछ लो, अगर उनका अच्छा मूड है वो आपको बता देंगे, अगर बुरे मूड में हैं तो जो आपको मिला उससे आपको स्टोरी बनानी है. So you know, it was a lot of teamwork that went in, and we're happy with what we've been able to do, is present 20 years on, you know, get the heavyweights, the guys who broke the scandal, to come and tell us what it was like. कुछ क्रिकेटर्स आए वैसे इसमें आपसे जिन्होंने ओपनली बात करी? देखिए, क्रिकेटर्स तो एक कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस तब से मेंटेन करते आ रहे हैं. अगर आप देखें तो मैच फिक्सिंग पे बहुत कम चर्चा होती है जहां पर क्रिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं. दूसरे लोग जरूर, यू नो, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज इफ वी वांट टू सी सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स. लेकिन हमारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से ज्यादातर, यू नो, इट्स अ नो the minute you touch upon this subject. That said, we did have somebody, हमारे फिल्म में एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने अजहर के साथ रणजी ट्रॉफी में खेला था, जिन्होंने इंडिया टीम में भी खेला उनके साथ. So yes, there is some support, or I would say some representation from players, but it was a very hard get. Very hard get. Yes. Understandable होगा ही. तो that's why I really wanted to know कि वो आए, कौन आया, अगर कोई आया सामने आके जिसने openly बात करी, because
क्रिकेट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट Yes. फर्स्टली, एंड हमेशा से रहा है, इंडिया के लिए स्पेशली हमेशा से रहा है कहीं ना बिल्कुल कहीं, बिल्कुल एंड हर कोई खुद को अपडेटेड रखता है, तो वहां से बाहर आकर इतने सालों बाद इसके ऊपर बात करना, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने में। एब्सोल्युटली कन्विंस करना तो और भी ज्यादा बड़ी बात है, मुझे बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, आपने सही बात बोली, इतने साल बाद, Yeah. और ऑल्सो इतने साल 20-23 साल बाद हम अपने आप को उस इवेंट से थोड़ा डिस्टेंट करके Yeah. एज एन आउटसाइडर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड व्हेन इट हैपेंड, देन वी वर ऑल इन्वेस्टेड इन Yeah. इट, अगर आप जर्नलिस्ट भी हो, जो भी आप हो, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट ब्रॉट अस अ लॉट ऑफ एक्कोलेड्स। Yeah. क्रिकेट ने हमारे लिए एज अ नेशन बहुत कुछ किया है, इवन नाउ Yeah. it continues to bring us together, no matter where you're from, which part of the country. We're such a massive country anyway. Yeah. जब इंडिया खेलती है तो you are cheering for India, you're cheering for the men in blue. Yeah. और 90s में तो ये बात और भी important थी, because India was not 83 World Yeah, Cup. We yeah. won the World Cup. It was a big deal. But Right. India had started performing well. We were playing very well at home, especially when Mohammad Azharuddin was the captain. Yeah. We would do very well at home. Yeah. It was, it was a good moment of glory for India at that point. Yeah. And then, तब report करना और अब में थोड़ा फर्क तो है. Yeah. And we can look at the changes, that have come in ever since. Yeah. How the game has blown up Yeah. to become the entertainment spectacle that it is. Yeah. ये दूसरी बात है. Cricket today is not necessarily only a sport. It's a massive industry which Yeah. is riding on entertainment. Absolutely. This illegal betting continues in huge numbers. Yeah. There are reports अब IPL शुरू होने वाली हाँ. है. You can see in the newspapers there are reports about clamping down on Right. potential fixing if it's going to happen, or the police being aware, the players being informed that you have to be Yeah. cautious. ये सब आज हो रहा है. That's true. अच्छा, अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉट आउट का ट्रेलर देखा तो एक वेब सीरीज मेरे दिमाग में आई एकदम से, और वो थी इनसाइड एज। हाँ जी. और अभी आज की डेट में भी वो वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज मानी जाती है ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसमें बिल्कुल. क्रिकेट और मैच फिक्सिंग, बैटिंग, सबको लेकर बहुत सारी चीजें हमें दिखाई। बिल्कुल. क्या आप लोगों की रिसर्च का भी पार्ट रही थी वो वेब सीरीज? देखिए, एक उसमें सेक्शन है जहां पर विवेक ओब्रॉय बताते हैं कि फिक्सिंग कैसे होती है. मुझे वो बहुत अच्छे से याद है, because when you set out to tell people about match fixing, about illegal betting in cricket, they're two different things. Yeah. And you want to break it down. Yeah. But हमारी एक non-fiction film है, तो while they could apply drama and they could use great dialogues, and they could write their story well for us, we wanted to rely on the right people, the real people. So all the interviews that you hear, we have हमारे पास हमारी फिल्म में हमने एक bookies से बात की, लेकिन वो anonymous है. Bookies अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते for obvious reasons, because it can cause trouble. लेकिन ये लोग उस टाइम के थे, 2000 के थे, that knew what was going on and was somehow impacted after this scandal broke. So we have been able to tell people what it's like from a bookie's point of view. It's what sort of things जो punter bet लगाते हैं, किन चीजों पे bet लगाते हैं, वो आज भी चलता है. लेकिन तभी 90s, 2000, early 2000s में betting थोड़े अलग तरीके से होती थी. वो एक आप फिल्म देखेंगे तो the bookie tells you कि उसको दुकान बोला जाता है. That just goes to show ये इतना organized. It's underground, but एक बहुत organized way में चलता है. और आप फिल्म देखेंगे तो you will understand कि bookie का क्या रोल होता है, bookie अपना क्यों काम करता है, what draws them into something like this, what tempts players. Players ने match fixing क्यों की, या उन पे allegations क्यों लगे, किन बातों पे, what were their weak points. ऐसी चीजों पे we have first hand commentary and people telling us what happened at that point in time, which is interesting. Yeah, it's very interesting in fact. Another thing which is very important is 90s का वक्त बहुत अलग था, because तब cricket of course was a big thing. But the money was not so big as it is today. If you look at अगर cricket में पैसा बरसात हो रही है पैसों की अब cricket में, अगर आप cricketer हो, अगर आप IPL में हो, अगर आप WPL में पहुंच गए, for women too, which is incredible. I'm so happy. With this अब पैसों की बरसात हो रही है. So motivations to do something like this, whether it's spot fixing or match fixing, will probably be very different from what they would have been in the 90s. ये चीज हम touch कर पाते अगर
फर्स्ट हैंड प्लेयर्स के इसमें कमेंट्री होती तो Right. अगर उनके साथ ये चर्चा हो सकती तो हम उनका एंगल बता सकते थे बट बिकॉज देयर इज दैट कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट the side of human frailty is something that remains untouched, which is very interesting. अच्छा, तो मतलब आप सबको ये बोलना चाहते हो कि जितने भी सारे फैंस अभी देख रहे हैं और वो फैंस है इनसाइड एज के, सो दिस इज गाइस अ मस्ट वॉच। अगर आप लोगों को इनसाइड एज पसंद आई और अगर आपको क्रिकेट के पूरे सिनेरियो में बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, सिर्फ अभी अभी नहीं, लेटेस्ट वाला नहीं, बिल्कुल, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें होंगी जो यहाँ पर खुल के सामने आने वाली है। यू नो इवन लेटेस्ट आई वुड से, अगर आप 90s के, अभी आप 2000s में पैदा हुए हो, यू नो, एंड you enjoy watching cricket, ये फिर भी आपके लिए important है क्योंकि you realize that you know sports should remain unscripted. अगर sports में cheating हो तो उसका मजा ही नहीं है, उसके audience के लिए कुछ नहीं है उसमें। audience को तब मजा आता है जब आपको पता नहीं हो आखिरी बॉल पे क्या होने वाला है, क्या इंडिया जीतेगी, क्या साउथ अफ्रीका जीतेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया, you know that thrill is something, you know, that is why we watch sports. और अगर आपको thrill निकाल दो, what is the sport? कुछ भी नहीं। So this film in a way goes to show कि आप ऊपर उस पद पे चढ़ जाए अगर once you are at that level, once you're playing for the country, once you're playing for a league, once you're playing for any team, how you conduct yourself there is what matters the most, because that is going to decide your future, right? You know, और जो learnings है इसमें they are valid for not just cricketers but sportsmen across the world and everybody across every sector. आप जो भी हो, आप जो भी काम कर रहे हो, you know, no matter how big you get, if there is wrongdoing, वो कहीं ना कहीं तो सामने आएगी कुछ बात. So you have to be careful about that, and you know, that's why I feel this film is relevant for people everywhere, men, women, across borders, whoever's watching. अच्छा, ये तो बात हुई इस फिल्म की और क्रिकेट की स्पेसिफिकली। थोड़ी सी आपकी फिल्मोग्राफी के ऊपर थोड़ा एक मेरा सवाल है, वो ये है कि बैड बॉय बिलियनेयर्स, मुंबई माफिया, नाउ कॉट आउट एंड सो मेनी मोर, बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स उठाते हो, व्हाई? बहुत हो गया, अब मैं नहीं करूंगी। I'm you know, देखिए, मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं, तो वो थोड़ा सा खून है to find out, you know, मैं समझ गई, to kind of get to the bottom of things, to know the other side, look at it from a different lens. ये काफी interesting stories हैं because they are stories of public interest and human interest. हमारा motivation, देखिए, ये again investigative stories नहीं हैं क्योंकि इनमें काफी कुछ you know, the scandals have broken, you know about this is public information, लेकिन जो human interest story है, that is something that remains untold, you know, and that is what we wanted to tell with our stories, is tell the stories of who these people are, whether it's Mumbai Mafia में अगर वो encounter cops हो, हमें पता है कि encounter cops, हम ये loosely बात कर लेते हैं, उन्होंने 60 लोगों को you know encounter किया, उन्होंने 80 लोगों का encounter किया, लेकिन they are also human. What was it like जब उन्होंने अपने line of duty पे कुछ किया? What was it like for them as humans? You know, it's not an easy job for anyone. It's not thrill to kill. So we wanted to show people that side. We wanted to show people the side of gangsters. You know, so we had a former gangster telling us what it was like for him. Again, it's not an easy life. You know, they've been through hardships. You want to understand the motive behind why people do certain things that they do. Caught out में specifically, as I mentioned to you, we wanted to understand वो जो burden था उनके shoulders पे, what was it like? You know, the fact that there was no room for error. Just to know that the whole nation is watching you. You know, it's not an easy job, and we wanted to humanize these stories. हम चाहते थे कि लोग समझें कि ये लोग कौन हैं. नहीं तो you know, हम इनके बारे में कभी नहीं जानेंगे. This will be the end of ये हुआ था. किसने हमें ये बताया? What went through their minds while doing it? That's what we were able to reveal through the films and the work that I have done. अच्छा, जैसे बैड बॉय बिलियनेयर्स है, एक शो जो मैंने पर्सनली देखा, मुझे खुद बहुत पसंद आया। कभी ऐसा होता था कि इस चीज को लेकर ट्रोलिंग हुई, कोई मैसेजेस आए? ट्रोलिंग तो नहीं हुई, लेकिन कोर्ट्स में ये बातें पहुंची because these were high profile people that we had made documentaries on, and it was quite path breaking in a way क्योंकि you know, these are very powerful people, and there are certain, you know, things that have happened that have been reported in a certain way, but we wanted to bring that story out and again give it a human angle. We wanted to go to
the various stakeholders across society Yeah. and understand from them कि वो क्या जानते हैं इनके बारे में, उनकी growth के बारे में, what started changing, what may have motivated them. तो ये काफी अगर आप देखें तो human interest story रही है फिर भी. But it's not easy to get, you know, in all of this I can tell you, लोगों से बात करना कैमरा पर is not an easy task. Access to people is incredibly difficult in non-fiction. Yeah, that's why I feel it's very risky also, yeah, because जितने भी subjects पर आप specifically काम करते आए हो, they've been very hard hitting first, then very influential people, very powerful people. Yes. So there's a lot of risk involved. There is risk, but you know we've done it very ethically. हमने जो journalism के ethics है, हमने अपनी story balance की. एक right to reply होता है, तो हम लोगों को बताते हैं कि we are doing this film and would you like to say anything about it? So all the films, if you look at them, we try to balance them because there is no, you know, we're not here, we're not the judge and the jury. We're not here to tell you कि ये सही है और ये गलत है. We're here to present to you the facts. And do it in an entertaining way so that you draw more people in to watch it. और वो हमने किया है, not with the intention to harm anybody, but basically in the interest of the public. अच्छा, कुछ देर पहले आप दोनों, मतलब हम दो विमेन यहाँ बैठी हैं और कुछ देर पहले हम विमेन लेड फिल्म्स की, विमेन लेड टीम की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, जो आपकी कॉट आउट की भी आपने बताया कि विमेन लेड टीम रही है. इससे मुझे याद आया अभी ऑस्कर मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को, अगेन विमेन, सो दैट वाज अ ह्यूज विन फॉर ऑल ऑफ अस. बट डोंट यू रियली फील कि कहीं ना कहीं हम लोग वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन का वेट कर रहे हैं टू गिव, यू नो, डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यू फिल्म्स दैट मच, यू नो, रिकॉग्निशन? देखिए, I don't think there is as much non-fiction as there should be, क्योंकि इंडिया में जो stories हैं, they are very moving stories. Every nook and corner, आप कहीं पर भी जाओगे, you will find a compelling story to tell. Seriously, yes. और आपने, I'm so glad आपने ये बोला, because I'm very strongly rooted in the craft of non-fiction. मेरे पास काफी लोग आते हैं, बोलते हैं ये fiction film करोगे, और मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी strong real human interest stories हैं. और मैं चाहती हूँ कि अगर we can take people on a journey of meeting the real heroes, ordinary people doing extraordinary things. Why not? And of course, the Elephant Whisperers, in some way, it remains to be seen what that win of the Elephant Whisperers is going to do for the genre here in our country. लेकिन हम चाहेंगे ये देखते हुए और नॉन फिक्शन कंटेंट कमीशन हो, हम चाहेंगे और ऑडियंस बने. अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑडियंस भी ज़्यादातर चाहते हैं कि भाई हम बहुत कुछ झेलते हैं काम पर, अपनी पर्सनल लाइव्स में, तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें स्विच ऑफ करना है. लोगों के क्या, मेरे अपने घर में जो लोग हैं, काफी लोग कहते हैं तुम ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों करते हो, वी वांट टू बी एंटरटेन, यू नो. सो मसाला टाइप फिल्म्स, दे वांट, इवन इन द फिल्म्स दैट वी डू, जो हमने फिल्म्स की, हमारे काफी सेट पे लोग हैं जो बोलते हैं यार मसाला नहीं था, जब हमने इंटरव्यू किया इतना मसाला मिल रहा था, तुमने मसाला नहीं डाला. Now you see, we as an audience love masala, whether it is sensationalizing the story, whether it is taking away from the story, we don't care. हमें चाहिए कि बस उसमें कुछ flavor हो, you know. And so I feel we are still trying to cultivate an audience that enjoys non-fiction, and that sort of storytelling, which is balanced, which relies more on the content and the weight of the contributors rather than all the drama and the conflict and the masala in it. But things are happening. You know, we've seen that people have appreciated Caught Out, people have enjoyed watching Mumbai Mafia. They know the efforts that go behind, and I'm really happy कि आज हम बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि थोड़े साल पहले तो कोई शायद बात भी नहीं करता. आप किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप बोलते मैं क्यों करूं, you know, there is something happening in Bollywood, I'd rather focus on that. But it's changing. I just hope you know that some of our stars come to endorse this style of filmmaking, क्योंकि support तो उन्हीं से आएगा तो ज्यादा eyeballs आएंगे. Otherwise we're trying bottom up. हम ऑडियंस से ऊपर लेते हुए जा रहे हैं, and that's also a route that is fine and we've taken, and देखते हैं where it takes us. But you truly feel कि अब Elephant Whisperers के बाद कुछ चीजें change definitely होने वाली है in terms of content. I truly hope. I cannot say for sure because I'm not sitting on the other side. I can only hope because I have a plethora of ideas with really strong people that I want to tell. That will resonate with each one of us. आपकी मेरी story है वो. You know, those are stories we are all invested in as people, as Indians, as women, as men from the country. So these are stories for us, about us, to celebrate us also. And that's what I want to tell.
बट आप अपने शोज और फिल्म्स तो लेकर आते रहते हो ओटीटी हाँ पर, जी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ड हिटिंग, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बोला कि कुछ हिला देने वाला कंटेंट आता है। एंड आई रियली फील, जैसे आपने बोला कि हमारे घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ ऐसा लगाओ, तो मेरे साथ सेम चीज होती है घर पे। मेरा थोड़ा टेस्ट अलग है बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, एंड Yes. मेरा कहीं ना कहीं वो चीज रहा है कि मुझे इस तरह की चीज ज्यादा पसंद आती है जिसमें थोड़ा सीरियस कंटेंट हो, कुछ सेंस हो। हाँ जी। जब मैं घर वालों के साथ देखती हूँ तो मेरी मॉम का सबसे पहले ये होता है, इसमें अच्छा बढ़ नहीं रही ना स्टोरी आगे, हाँ। एक कुछ और नहीं हुआ ना अभी तक, कुछ फन नहीं है, ओ, ये नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि घर वालों को अल्टीमेटली वही चाहिए कि अगर हम टीवी देख रहे हैं या हम कुछ भी ऐसा देख रहे हैं, ओटीटी खोल के बैठे हुए हैं, चेक कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा देखें जिससे हमें हंसी आए, हमारे चेहरे पर स्माइल आए। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल, वो रियलिटी घर- वो कहते हैं हम ऑलरेडी रोज अपनी लाइफ में देखते बिल्कुल हैं ना। घर की कहानी है, लेकिन Yeah. प्लीज आंटी को कॉट आउट दिखाइएगा, चाहे वो 10 बार सो जाए Definitely, देखते देखते, क्योंकि बहुत स्लो लगी उनको, लेकिन जरूर दिखाइएगा, For क्योंकि sure, ये हम इसमें हमारे जैसे लोग हैं जी। जो अपना काम लाइन ऑफ ड्यूटी पे Yeah. जिन्होंने एक्सेल किया है, Yeah. और अगर हम ऐसी फिल्में नहीं देखेंगे तो हम उनके काम के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। That's true. इसलिए हमारा स्पॉट शायद क्लीन अप हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने, यू नो, आई से इन इंग्लिश, दे स्टक देयर नेक आउट, Yeah. you know, so because it's plural, they stuck their necks out Yeah. to do this, Hmm. and they did it again 20 साल बाद उन्होंने फिर से किया। Yeah. वो हमें बोल सकते थे भाई हमने अपना काम कर लिया, हाँ. हम आपसे बात नहीं करना चाहते, Right. but I'm glad they agreed, और हम उनकी human side दिखा पाए। So yeah, let's hope that we see more films like that, and हमारे काम में और लोग विश्वास करें, ताकि they are willing to come forth Yeah. and tell their stories. Yeah. क्योंकि आप इन stories में ही, if they resonate, आप अपने आप को देखोगे, they Yeah. will be inspiring for you. You know, this is how things spread Yeah. positively as well. अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जिसका भी इंटरव्यू लेती हूँ, जिससे भी चैट करती हूँ, आई डोंट लाइक टू कॉल इट एन इंटरव्यू एनीवे। मेरे लिए वो It's a chat. इट्स अ चैट, लाइक Sure. आई डोंट लाइक द टर्म इंटरव्यू, Sure. बड़ा सीरियस लगता है सुनने में। तो मैं जिनसे ही बात करती हूँ, मैं उनसे जरूर पूछती हूँ कि आपकी क्या रिकमेंडेशंस है, कि रिसेंटली आपने क्या देखा है ओटीटी पर, बिकॉज मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो कुछ ना कुछ लोगों को रेकमेंड करती रहती हूँ देखकर, मुझे अच्छा लगता है जब सामने कोई हो और उन्होंने कुछ देखा और वो मुझे रेकमेंड कर सके, और यहाँ पर ऑडियंस को भी कर सके। सो अपने शोज और फिल्म्स तो लाते रहते हो, लेकिन अभी रिसेंटली क्या ऐसा ओटीटी पर देखा जो बहुत पसंद आया और चाहते हो कि लोग देखे, यार कुछ बढ़िया था उसमें? I would say, देखिए सबका टेस्ट अलग अलग है। एक जेफरी एप्स्टीन पे नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई हुई है, इट्स नॉट वेरी न्यू बट इट्स एन इनक्रेडिबल सीरीज, और ये जॉनरा अलग है। अब मुझे नहीं पता कि आपके दर्शक या आपके फॉलोअर्स ये पसंद करेंगे, बट इट्स अ स्कैंडलस स्टोरी अगेन, set in America, set in Europe. जिसमें there was a lot of wrongdoing, you know, there was sexual assault, and women coming out and speaking for themselves. तो जो women हैं, उन्होंने इसके बारे में, you call them whistleblowers, उन्होंने हौसला किया and they came out to speak on camera. I find that very inspiring, क्योंकि अगर लोग अपनी stories नहीं बताएंगे तो we cannot change the world, we cannot change things and situations. So I would say that everyone should go and watch films like these, so you realize in the power of media and the power of film and the power of storytelling, to be able to make that change that you want to see. But otherwise, yeah, I mean, that's what I would say at this point. Is worth getting out to watch. मुझे ऐसी recommendation की उम्मीद थी आपसे। बिल्कुल यही उम्मीद थी। मैं और 2-3 बोल रही थी, लेकिन I thought चलो let's stay back. You know, there's enough of great Indian content as well. Elephant Whisperer again is something that people should watch if they haven't seen. I think ऑस्कर मिलने के बाद तो बहुत लोगों ने देखी है। बहुत लोगों ने उसके बाद देखी है। चलो तो आप कॉट आउट ही देख लो, हमारी जो फिल्म है, because that came out on Netflix a few weeks ago. And you know, we'd like for people to watch. It's a documentary on cricket, not just cricket, but crime and corruption in cricket. So if you are a fan of true crime, this is also a film for you. And it tells you about sports and sportsmanship and what needs doing to keep the games clean. Okay. Thank you very much, Supriya, on that note, and it was a lovely chat and very insightful as well. Thank तो you बहुत very much. मजा आया आपसे बात करके, and thank you for your time today. आप स्पेशली आए and आपने हमसे कॉट आउट के ऊपर इतनी डिटेल में बात करी, क्रिकेट को लेकर स्पेशली इतनी डिटेल में बात करी, so that was a lovely chat. Lovely. Thanks so much for having me. Thank you very much.